Hello and welcome back to our YouTube channel. This video is on the living world, first chapter in class 11th biology. What is living? What is the meaning of being alive? What is the meaning of life? Now, considering all the aspects of life processes, one can say that there are four general characteristics of all living beings. जितने भी living organisms हैं, all of them can grow, all of them can reproduce, they have metabolic processes taking place in their body, and all of them are conscious or aware of their surrounding. Let us look into these terms one by one. Growth. All the living organisms can grow. जितने भी living organisms हैं वो सारे के सारे grow कर सकते हैं. So what exactly is growth? Growth का मतलब क्या है? Growth is increase in mass and increase in number of individuals. Both of them are considered as twin characteristics of growth. Plants में जब growth होता है तो it is through cell division and it takes place throughout their lifespan continuously. लेकिन animal में ऐसा नहीं होता. Animals can only grow up to a certain age. कुछ समय बाद इनका growth रुक जाता है and now whenever the cell division will take place, it will be for repair of the lost tissues. Unicellular organism का growth is by cell division, of course, and this cell division is not only letting the unicellular organisms grow, but they are also supposed to reproduce through these divisions. This is not true for higher animals and plants. यहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों दो इवेंट्स हैं, अलग अलग इवेंट्स हैं. दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. व्हाई? बिकॉज व्हेन ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस देयर इज इंक्रीज इन मास, and when reproduction is taking place there is increase in number of individuals, there is production of progeny. ठीक है. Now अगर हम increase in body mass को consider करते हैं as growth means increase in body mass, which is true. Now, there are several non-living objects also that can grow. Right? For example, mountains grow over the years. Mountains में growth आता है, लेकिन this growth is not from inside, it is from outside. Okay, there is a difference between growth of non-living objects and of living organisms. Living organisms will always grow from inside. Okay, try to understand this. And because the growth is observed in non-living objects as well, this cannot be taken as a defining property of living organisms. So in order to search for a defining property of living organisms, let us move on to the next characteristic, which is reproduction. Reproduction is also a characteristic of living organism. Now, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? This is because now every organism, every individual has to die. And in order to continue life on earth, they should reproduce. वो reproduce करेंगे, offsprings produce करेंगे, तो ही उस species का continuation earth पे possible हो पाएगा. So there are two ways in which reproduction can take place. It is sexual and asexual. Asexual mode of reproduction may be through the spores, through birds, or the organism can regenerate, and fragmentation is also observed in some of the organisms. Binary fission, multiple fission, these are all observed in unicellular organisms like bacteria, algae or amoeba. In unicellular organisms में growth और reproduction दोनों एक ही चीज है, लेकिन higher organisms में दोनों mutually exclusive events हैं, दोनों अलग अलग events हैं. Unicellular में reproduction और growth दोनों synonymously use होता है. Division के साथ reproduction भी हो रहा है और growth भी हो रहा है. Now, whatever is the case, this is fact that reproduction is absolutely required for an organism to continue life on the planet. ठीक है, लेकिन इतना necessary होने के बाद भी there are many organisms which do not reproduce.
For example, there are of course some infertile human couples, but mules and worker bees are also not able to reproduce. Now, because of this exception, reproduction is also not considered as an all-inclusive defining characteristic of living organism. With this, we'll now move on to the next characteristic of life, metabolism. Now, metabolism is another characteristic of life. What is the meaning of this term metabolism? क्या है इसका exact मतलब? Metabolism का मतलब है कि the sum total of all chemical reactions that takes place in our body is known as metabolism. और हमारी बॉडी में साइमल्टेनियसली एक साथ कई सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, कहीं पे एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिव है, किसी हार्मोन को ब्लड में सिक्रीट किया जा रहा है, वो हार्मोन ट्रैवल करके अपने टारगेट ऑर्गन तक जा रहा है, वहां पर उसका कुछ रिएक्शन हो रहा है, वी आर ईटिंग, द फूड इज गेटिंग डाइजेस्टेड, एब्जॉर्ब्ड, इट इज ट्रांसपोर्टेड एंड सेंट टू टिश्यूज, टिश्यूज में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी. सो एट वन इंस्टेंट देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शंस टेकिंग प्लेस simultaneously, or that is only observed in living organisms. No non-living object can show metabolic reactions. There is absolutely no metabolic reactions in non-living objects. एक भी नहीं है ऐसा. लेकिन ये जो metabolic reactions ही हैं, जो कि living systems में होते हैं, इनको cell free system में भी कराया जा सकता है. इसको इन विट्रो सिस्टम्स में भी कराया जा सकता है. इसका मतलब, इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी. विट्रो कम्स फ्रॉम विट्रस, मतलब ग्लास. जैसे टेस्ट ट्यूब्स में कोई केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस कराया गया तो उसे हम कहेंगे कि द मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैज टेकन प्लेस आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम. वो टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर कोई सेल नहीं है, इट इज आउटसाइड द सेल. ठीक है, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि सेल का पार्ट था, इस लिविंग सेल का पार्ट था, ये रिएक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कंसीडर करो कि ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है. ठीक है, देयर इज ग्लूकोज विच इज गेटिंग फॉस्फोराइलेटेड. तो इस ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन का मतलब है ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो जाना. This reaction can also take place inside the cell and outside the cell here in the test tube. Okay, so when this reaction takes place in test tube, you call it as in vitro reaction. So metabolism is definitely a defining feature of all living organism, क्योंकि ये living organisms को के अंदर होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन हैव मेटाबॉलिज्म एंड नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैन हैव मेटाबॉलिज्म. बट this is also true that the isolated reactions that is taking place outside the body is neither living nor non-living. इसलिए we consider that cellular organization of the body is defining feature of life form. It is the cellular organization. Cell free system में भी तो reactions हो रहा है, लेकिन that is not living. So it is the cellular organization which is the defining feature of life form. Finally, we have consciousness. All the living organism can sense and respond to their surrounding. जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने आसपास के वातावरण को सेंस कर सकते हैं और उसको रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड कर सकते हैं. ठीक है, और ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. Why? Because there are number of stimuli and there are huge variety of organisms. कुछ organisms सिर्फ unicellular एक सेल के बने होते हैं, कुछ multicellular होते हैं. So organisms
इसका एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बहुत वेरी करता है, एंड देन जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है, जो कि फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कुछ भी हो सकता है, वो भी बहुत वेराइटी का है। तो इन स्टिमुलाई को सेंस करके रिस्पॉन्ड करना, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड फीचर, right? And every organism, I'm emphasizing here, whether it is unicellular made up of a single cell or it is the most complicated one, all of them can sense and respond. Okay, even the bacteria can sense. There is quorum sensing found in bacteria. उसी तरीके से दूसरे ऑर्गेनिजम्स, सारे ऑर्गेनिजम्स के पास कुछ ना कुछ ऐसा फीचर है कि दे कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द external stimuli. Okay, जैसे we can sense through our sense organs, plants भी sense करते हैं, उनमें light, water, temperature, दूसरे organisms और pollutant को sense करके respond करने का feature है. So we can say that all the organisms are aware or conscious of their surrounding. इनमें humans के पास एक special feature है, additional feature है, that we are not only aware of the surrounding, but we are also aware of ourselves. Human is aware of himself and therefore we have self consciousness. ठीक है, किसी और ऑर्गेनिज्म में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, सबके अंदर सिर्फ कॉन्शियसनेस है. इट इज जस्ट ह्यूमन दैट आल्सो हैज गॉट self consciousness, self awareness. Okay, therefore we consider consciousness as the defining property of living organisms. That is all in this video. In next video we'll be talking about diversity in the living world.